So this lecture is one of the most important lectures from entire rhinology series because we are going to discuss about lateral wall of nose. जो हमारा lateral wall of nose है ये हमारे लिए बहुत important है because of two reasons. One, बहुत सारे questions इसमें से बनते हैं from for Viva point of view and from MCQ point of views, from theory point of view also. So lots and lots and lots of hundreds of questions from this topic of lateral wall of nose. Second, इसमें जो मोस्ट ऑफ द डिजीजेज ऑफ नोज है एंड पैरानेजल साइनसेस है वो सारी की सारी लेटरल वॉल ऑफ नोज से ही लार्जली अराइज करती हैं. तो आज हम लेटरल वॉल ऑफ नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस. And in the next lecture, once we have understood this, it will be a cakewalk. We will quickly do the topics of diseases of lateral wall of nose, right? So let's not waste time. Let's go ahead with the lateral wall of nose. What we already know. So let's start from there. We already know that the lateral wall of nose. Let's talk about the bony framework. This is the nasal bone. You know, this is the nasal bone. This is the upper lateral cartilage. This is the lower lateral cartilage, right? Then this is the lining skin which goes inside and this forms the nasal vestibule. So the skin is folded inside and it contains hair which is called as vibrissae, and this much area is your area of vestibule. You know that the lower end of the upper lateral cartilage corresponds to a line which is called as limen nasi. We have learned this in the anatomy lecture, limen nasi. What is limen nasi? Limen nasi is the line that corresponds to the lowermost end of the upper lateral cartilage, which inside the nasal cavity corresponds to the nasal valve area. So this line that you're seeing here is the narrowest part of the lateral nasal wall. All right. Now once let's go inferiorly. This is your palate. All right. This is your palate. No problems with this. This is your upper lip. All right. So this is your this brown structure that you're seeing is the muscle orbicularis ori, and this is your palate, and hard palate continues with the soft palate, and which is the muscle of the soft palate which forms the uvula, the uvulae. All right, good. So this is the hard palate, this is the soft palate. Wonderful. Then posteriorly, you know, this is the superiorly, sorry, you know, this is the frontal bone. Frontal bone will continue with the ethmoid, and the ethmoid will continue with the sphenoid. So this is the sphenoid bone. We have already seen in the lecture of JNA and the lecture of nasopharynx that the posterior superior margin of the nasopharynx is formed by sphenoid bone, and that is why this part of the sphenoid or the roof of the nasopharynx is called as basisphenoid. Remember this term, basisphenoid term we had used in the roof of the nasopharynx. This is the base of the sphenoid, right? And posteriorly you have got the vertebrae. But if somebody asks you what is the posterior boundary of the nasal cavity, you will not say vertebrae. What will you say? You will say nasopharynx, right? So this line here that you can see, this line divides the nasal cavity from nasopharynx. So here the pharynx starts, all right, the pharyngeal tube starts and the nasal cavity ends. So nasal cavity anteriorly is open into external nares or external nasal valve, whereas posteriorly it is opening into the nasopharynx. Just by this diagram you can you tell me, is this part bigger or is this part bigger? I don't think it's rocket science. Obviously posteriorly there is more space. We will remember this point in the next lecture when we talk about enterocoinal polyp, why it grows posteriorly and not anteriorly. So till then, remember this point that there is more space posteriorly compared to anteriorly. All right. Now coming to the nasal cavity, the nasal wall. First of all, let's talk about the lining epithelium. We know that the entire nasal cavity is lined by ciliated columnar epithelium. This epithelium is commonly called as the respiratory epithelium, but in the nose it is called as the Schneiderian epithelium. Schneiderian epithelium, and the tumor arising from this
mucosa, just the mucosa, not anywhere else, is called Schneiderian's tumor or inverted papilloma. We will talk about this in the next lecture. Now coming to the other structures on the lateral nasal wall, what you can see here is the three turbinates, 1, 2 and 3. These are bony projections. Alright, these are called as concha or turbinate. Alright, now in my class one day, one of my students asked me, what is the difference between turbinate and concha? So just understand this point, that if this is the ethmoid bone and this is the bony projection in the ethmoid bone, then this bony projection, this bony projection simply is called as a concha. But when there is mucosa around it, then the entire structure is called as the turbinate. It is called as the turbinate. All right. So concha and turbinate are interchangeable words. Basically, when we talk about concha, we mean only the bony part. When we talk about the turbinate, we mean the bone along with the mucosa. That is the small difference between turbinate and concha. What you need to remember over here is that the inferior turbinate is a separate bone. See, now if we have a look at the frontal view from the front, if we look at the nose, then this is the ethmoid bone. We know that the ethmoid bone medially in the center gives contribution to the bony septum, perpendicular plate of ethmoid. Superiorly, it forms the base of skull, or also called as the cribriform plate of ethmoid, and laterally it forms the lateral nasal wall, which gives mainly two big projections, which is the superior turbinate and the middle turbinate. The inferior turbinate is a separate bone altogether, which has a joint with the ethmoid bone. सो इंफीरियर टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन. इट इज जो हमारी 206 हड्डियां हैं उसमें इथमॉइड एक बोन है और इंफीरियर टर्बिनेट एक बोन है. सो टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन. बट नाउ how about this middle turbinate and the superior turbinate? They are projections from the ethmoid itself. All right, if you put a camera over here, what will you see? You will see the inferior turbinate and you will see the middle turbinate. The superior turbinate actually is behind the middle turbinate. It is posterior to the middle turbinate. Why it is posterior, we will just see in 2 minutes. But what I want to bring your attention to is that when you draw a diagram of anterior rhinoscopy, you can draw the septum, and then you will draw only two turbinates, the middle turbinate and the inferior turbinate. Do not end up drawing the superior turbinate. The superior turbinate is not seen on anterior rhinoscopy because of the large anterior portion of the middle turbinate. So remember, in anterior rhinoscopy, if the question comes or you are asked in the viva, what are the structures that you can see on anterior rhinoscopy, then you can see the nasal septum, you can see the nasal septum, you can see the nasal floor, definitely you can see the nasal floor, you can see the inferior turbinate and the middle turbinate, and maybe a part of the roof of the nose. That is all. Do not utter the word superior turbinate in anterior rhinoscopy. All right. Now let us understand how these turbinates develop and what is the why is superior turbinate behind the middle turbinate. So in birth, in the intrauterine life, what happens is that this lateral wall of nose has, the ethmoid shows 5 projections. The ethmoid bone comes out with 5 projections. These projections are called as turbinales. Turbinals. All right, these turbinals are nothing but projections. All right, they are projections from the ethmoid bone medially. Now these 5 projections jo hai, if you see here, this is the first, second, third, fourth, fifth. Now of these 5 terminals, the first terminal gives rise to what is called as uncinate process. All right. So the first structure that you see, the first projection. Now if I start showing you a diagram of the lateral nasal wall, this is the vestibule.
Now, the first projection that you see is the uncinate process, and this uncinate process has come from the first terminal. All right. The second terminal that gives rise to the middle turbinate. That gives rise to the middle turbinate. So this is your middle turbinate. It grows posteriorly and gives rise to the middle turbinate. The third one gives rise to the superior turbinate. The third one gives rise to superior. So now, because it is 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. They are anterior to posterior. All right. This is anterior. This is posterior. So obvious सी बात है कि ये अनसिनेट बन गया, ये मिडल टर्बिनेट बन गया, ये सुपीरियर टर्बिनेट बना. तो सुपीरियर टर्बिनेट कहाँ आएगा? मिडल टर्बिनेट के पीछे. All right. So it actually grows behind the middle turbinate. All right. And the fourth and the fifth, they usually fuse and they regress. Sometimes they persist, and if they persist, it gives rise to another turbinate called as the supreme turbinate. So supreme turbinate is not always present. It is rarely present, and if it is present, it is a remnant of the fourth and the fifth terminal of the ethmoid bone. All right. सो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने टर्बिनेट्स होते हैं, तो टोटल हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज 3 टर्बिनेट्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. बट समटाइम्स देयर कैन बी अ फोर्थ टर्बिनेट which is called as the supreme turbinate. It is called supreme turbinate. Supreme सबसे सबसे ऊपर होता है, सबसे पीछे होता है. So it's here, almost close to the sphenoid bone. All right. So ये हमारा टर्बिनेट्स का डेवलपमेंट हो गया. फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टर्बिनल्स. एंड वेयर इज इट ऑल हैपनिंग? इट इज ऑल हैपनिंग इन द इथमॉइड बोन. सो इथमॉइड बोन से बना हमारा अनसिनेट प्रोसेस, मिडल टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट एंड सुप्रीम टर्बिनेट. वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर about the middle turbinate. So let me just erase this whole structure and हम यहीं पे इसको एड्रेस कर देते हैं. जो हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है अबाउट योर middle turbinate. The middle turbinate is like this. All right. It has got a huge anterior portion and then a posterior portion like this. All right. अब इसका जो एक्चुअल अटैचमेंट है, इफ आई एक्चुअली कट दिस मिडल टर्बिनेट, then the actual attachment of the middle turbinate is limited more like this. ठीक है. ये बाकी का जो है वो सिर्फ एक फ्लैप की तरह चल रहा है. ठीक है. सो जो उसका मेन अटैचमेंट है मिडल टर्बिनेट का, वो आपका ये अटैचमेंट है. राइट. सो ऑन द लैटरल नेजल वॉल. नाउ this boomerang shape attachment or sigmoid S shape attachment of the middle turbinate, this is called as ground lamella. This is called as ground lamella or basal lamella. All right. लैमेला क्या है? ये बेसिकली वो पार्ट है मिडिल टर्बिनेट का जो एक्चुअली अटैच कर रहा है लैटरल नेजल वॉल पे. सो अगर ये लैटरल नेजल वॉल है तो अटैचमेंट इतना ही है. ठीक है. अटैचमेंट एक छोटा सा ही है, बाकी सारा एक फ्लैप की तरह लगा हुआ है खाली. So the rest of the middle turbinate is actually coming like a flap only. ठीक है. So this is called as the ground lamella or the basal lamella. What is the significance of this? We will see in a short while. All right. Now, if we have understood this, let us now go into the understanding of the rest of the lateral nasal wall. तो अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि हमने टर्बिनेट्स को कट कर दिया है. सो ये हमारा है सुपीरियर टर्बिनेट, ये है हमारा मिडल टर्बिनेट जिसका नीचे से ऐसे फ्लैप बन रहा था पर हमने इसको कट कर दिया है, और ये है हमारा इंफीरियर टर्बिनेट. ठीक है. अब इन टर्बिनेट्स जो, अगर ये हमारा लैटरल नेजल वॉल है और ये टर्बिनेट है, ठीक है, तो ये जो स्पेस बनती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिएटस. मिएटस इज बेसिकली नथिंग बट ए ओपनिंग, hollow opening. So this is called as a meatus. So इसको हम कहते हैं meatus. और ये meatuses जो है सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे कौन सा होगा? सुपीरियर meatus. मिडल टर्बिनेट के नीचे क्या होगा? मिडल meatus. और इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे क्या होगा? इंफीरियर meatus. So it's not very difficult. समझ गए आराम से. अब
हर मियाटस के अंदर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। सुपीरियर मियाटस में कुछ भी नहीं है, एज सच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कोई नहीं है। मिडल मियाटस जो है हमारा, उसके अंदर में हमारा एक ये एरिया है विच इज इन द शेप ऑफ अ हाफ मून। तो इसको हम कहते हैं हाइएटस सेमिलुनारिस। सेमिलुनारिस, ठीक है, हाइएटस सेमिलुनारिस। हाइएटस सेमिलुनारिस जो है ये हमारा जो एरिया है ये है, और इसके अंदर में हमारे तीन इंपॉर्टेंट साइनसेस ओपन करते हैं। सी यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द फ्रंटल साइनस जो यहाँ पे ओपन कर रहा है। सो द फर्स्ट साइनस दैट ओपन सुपीरियरली इज योर frontal sinus, is your frontal sinus. The second thing that you can see over here is the maxillary sinus. So this is the opening of the maxillary sinus. So the second opening that you can see in the hiatus semilunaris is the maxillary sinus. And here you have all your ethmoid air cells. You have got your anterior ethmoid air cells. So the next opening that you have is of the anterior ethmoid air cells. Anterior ethmoid air cells. All right. So three important sinuses that open here are your frontal, maxillary and anterior ethmoid air cells. Is there any doubt in this? No doubt. Wonderful. There is one small opening behind the middle turbinate. Behind the middle turbinate there is a small opening which is called as sphenopalatine foramen. Sphenopalatine foramen. And remember what comes out from this sphenopalatine foramen? The juvenile nasopharyngeal angiofibroma. The site of origin of JNA is the sphenopalatine foramen. So these are the important structures in the middle turbinate. All right. Middle meatus. And in the inferior meatus, you have got one opening only, and this opening in the inferior meatus is of the nasolacrimal duct. So, if this is your eyes and this is your nose, your nasolacrimal duct opens in the inferior meatus. So, our lacrimal gland is here, outwards and laterally on the upper lid. From here, our lid closes like this, all right, from outwards to inwards. So, the tears, they come medially. And on the medial canthus, you have got your puncta, the openings from which the canaliculi combine to form a lacrimal sac, which goes into the nasolacrimal duct. And this duct opens here. So if I have to draw this duct here on this diagram, then the duct is coming from the eyes like this, all right, from the eyes like this, all right. This is the direction of the duct. So if there is an obstruction of this duct called as dacryocystitis, I mean there is inflammation of the lacrimal sac, then you open up this area and make an opening here. This is called as dacryocystorhinostomy. यानी lacrimal sac, dacryo मतलब lacrimal, cyst मतलब sac, and rhinostomy मतलब opening in the nose. So you are making one opening in the nose, all right, over here. That is called as dacrocystorhinostomy. Now, once we have understood this, there are a few terminologies which sometimes confuse you, and we are going to address those terminologies now. One terminology that may confuse you is your infundibulum. What is infundibulum? Infundibulum is nothing but the three-dimensional orientation of the hiatus semilunaris. तो अगर हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हाइएटस सेमिलुनारिस है, लेकिन इसी को अगर हम थ्री डायमेंशन में जब हम देखेंगे एंडोस्कोपिकली, सो दैट एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ दिस हाइएटस सेमिलुनारिस व्हिच इज द थर्ड डायमेंशन, दैट इज द डेप्थ, कि भाई कहां पे फ्रंटल साइनस खुल रहा है, कहां पे मैक्सिलरी साइनस ऑस्टिया है, दैट इज कॉल्ड एज infundibulum. All right. And one more structure concept, that is what is Piccadilly circle or area. Piccadilly circle or Piccadilly area is nothing but
I think it's LY, Piccadilly Circle or Piccadilly area is nothing but this osteomeatal complex. It is also called as osteomeatal complex, यानी आपके जो साइनसेस का ऑस्टिया है और जो आपका मिएटस है, मिडल मिएटस, तो ये जो पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पिकाडिली सर्कल और पिकाडिली एरिया और ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया हमको व्हाट इज अबाउट द anatomy of the lateral wall of nose. What are the important structures we are seeing over here? We are seeing the turbinates, the superior, middle and the inferior, of which inferior turbinate is a separate bone, the 3 meatuses and the opening of different sinuses. But we haven't completed all the sinuses. We will come back to the sphenoid sinus and posterior ethmoid in a short while. But so far you have to understand what is the osteomeatal complex, what is infundibulum, what is Piccadilly area or the osteomeatal complex. Is that clear? Very good. Now let us first understand a little bit about the paranasal sinuses before we go into the details of the opening of these sinuses. There are 4 sinuses, you know that. What are these 4 sinuses? You have got maxillary sinus on the either side, that is the green in color. You have got your ethmoid sinus which is blue in color, and this is the frontal sinus which is orange in color. And then posteriorly you have got this sphenoid sinus which you can see better in the axial view. So ये आपका हो गया, आगे से जब हम देख रहे हैं तो हमें ये 3 sinuses दिख रहे हैं in pair. So these are all paired sinuses. They are all paired. Now some books will tell you that which is the unpaired sinus, and the answer will be the sphenoid sinus. Sphenoid sinus is sometimes referred to as the unpaired sinus. Now logically speaking, क्योंकि एक ही स्फिनॉइड बोन है तो हम कहते हैं कि वो अनपेयर्ड साइनस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे तो इथमॉइड बोन भी एक ही है, लेकिन हम इथमॉइड साइनस तो 2 गिन रहे हैं क्योंकि दोनों साइड पर है। वैसे ही दो स्फिनॉइड साइनस है उसके बीच में एक सेप्टम होता ही होता है, and this septum is always there, and that makes the entire sinus into 2 cavities, that is the left and the right cavity. So इसीलिए हमेशा स्फिनॉइड साइनस भी पेयर्ड ही होता है। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में स्फिनॉइड है देन यू हैव टू मार्क स्फिनॉइड, बट दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल थॉट. Nowadays we don't consider it as a unpaired sinus. It is a paired sinus, and there are 4 paired sinuses: maxillary, ethmoid, frontal and sphenoid is posteriorly. All right, so अगर हम थोड़ा सजाइटल व्यू से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा फ्रंटल, ये है इथमॉइड, ये है मैक्सिला और ये है स्फिनॉइड। 2 चीजें पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम वापस डायग्राम पे जाएंगे कि ये साइनसेस है क्या और क्यों है। साइनसेस बेसिकली डेवलपमेंटली हम अगर देखें हमारे, तो पहले हमारे वाटर एनिमल्स हुआ करते थे, फिर एम्फीबियंस आए यानी लैंड के ऊपर आने लगे, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर उसमें से बर्ड्स बनी और मैमल्स बने, राइट। नाउ जो जब जब देखिए हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वन ऑफ द मैकेनिज्म्स दैट मेक देम फ्लाई इन द एयर इज द लाइट वेट। उनका वेट बहुत लाइट होता है। वेट लाइट कैसे होता है? क्योंकि उनके बोन्स के अंदर में एयर स्पेसेस होती है जिसको हम साइनस कहते हैं। द सेम वे इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा हेड इतना बड़ा है और ये हेड हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड कैसे है? वाया द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। ठीक है, तो एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में इतना बड़ा हेड कैसे कनेक्टेड रहेगा? टू मेक द हेड लाइटर we have got these air spaces that are your sinuses. All right, तो पहला चीज तो ये समझ लेते हैं कि ये hollow spaces है जिसके अंदर में सिर्फ एयर होती है, और कुछ भी आ गया तो वो एबनॉर्मल है। अगर उसके अंदर में म्यूकस आ गया तो एबनॉर्मल है, उसके अंदर में ट्यूमर आ गया तो एबनॉर्मल है, कोई फॉरेन बॉडी आ गई तो एबनॉर्मल है। नाउ ये बनते कैसे हैं? So there are multiple air cells, all right? So there are going to be multiple air cells. Now usually these air cells while during development they coalesce to form one air cell. So maxilla का क्या होगा? एक एयर सेल बन जाएगा इधर और एक एयर सेल बन जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में जब मैक्सिला का डायग्राम देखेंगे ना, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा एकदम ऐसे स्मूथ नहीं है। That is because it develops from multiple air cells, all right? What advantage do we get? एक एयर सेल वर्सेस मल्टीपल एयर सेल्स के अंदर में हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है या क्या एडवांटेज मिल रहा है?
यूजुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव गॉट मल्टीपल एयर सेल्स और दिस ये जो रह जाते हैं ना इनफोल्डिंग, इनको हम कहते हैं स्कैलोपिंग। इनको हम क्या कहते हैं? स्कैलोपिंग। ये जो स्कैलोपिंग होता है ना, इसकी वजह से हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सो एक तो हमारा ये साइनस है और एक हमारा ऐसा करके साइनस होगा, तो ये जो एरिया होगा ना, सरफेस एरिया, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसका म्यूकोसा म्यूकोसा जो है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है, वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। और उसके अंदर में जो वेंटिलेशन हो रहा है साइनसेस का, दैट विल बी मोर इफेक्टिव बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द साइनसेस। सो हमारा फ्रंटल साइनस कभी भी ऐसा नहीं होता। फ्रंटल साइनस का एक्चुअल में आप कभी सीटी स्कैन, एमआरआई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। It is always like this, there are lots of scalloping that you will see in the frontal sinus. Same with ethmoid. Ethmoid, तो if you see over here, you will see that ethmoid तो ऐसे, it's like a grapes का bunch कैसा होता है, exactly वैसा होता है ethmoid sinuses. So that is very very important to understand that ये आपके जो साइनसेस हैं, ये डेवलप करते हैं मल्टीपल एयर सेल्स से, विच फ्यूज टू फॉर्म वन बिग साइनस, बट ड्यूरिंग दैट फ्यूजन द स्कैलोपिंग परसिस्ट्स। ऑलराइट, ये हम समझ गए इस चीज को। अब एक चीज और हम यहां पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वो है कॉन्सेप्ट हमारा रिगार्डिंग द बोन्स। ये है हमारा, मान लीजिए, नेजल कैविटी, यहां पे हमारा है मिडिल टर्बिनेट। ऑलराइट, सॉरी, थोड़ा सा ऐसे, मिडिल टर्बिनेट, and this is your superior turbinate. All right, now ethmoid air cells will grow everywhere, no? ethmoid बोन के अंदर में ही हो रहा है ना, तो ethmoid बोन के अंदर में ethmoid cells तो बहुत सारे होंगे, हजारों ethmoid air cells होंगे। तो ये जो मिडिल टर्बिनेट है, ये मिडिल टर्बिनेट इज लाइक अ डिवीजन। जो एयर सेल्स इसके आगे होते हैं वो एयर सेल्स होते हैं एंटीरियर इथमॉइड एयर सेल्स, और जो एयर सेल्स इसके पीछे होते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर इथमॉइड एयर सेल्स। सो दीज आर योर एंटीरियर इथमॉइड एयर सेल्स एंड these are your posterior ethmoid air cells. So anterior ethmoid air cells open in front of the ground lamella, whereas posterior ethmoid air cells open behind the ground lamella. So क्योंकि ये मिडिल टर्बिनेट के पीछे है, तो posterior ethmoid air cells are not a part of middle meatus, they are a part of the superior meatus, they are a part of the superior meatus, superior turbinate के नीचे आ रहे हैं, और तो वो किसके पार्ट हो गए, सुपीरियर मिएटस के, जबकि एंटीरियर इथमॉइडल एयर सेल्स किसके पार्ट हो गए, मिडल मिएटस के। किसके पार्ट हो गए, मिडल मिएटस के। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अ लिटिल बेटर। यहां पे हमारा ये जो एयर सेल्स हैं, यहां पे ये एयर सेल्स हैं एंटीरियर इथमॉइड एयर सेल्स। तो ये हमारा मिडल मिएटस था, तो यहां मिडल मिएटस में खुल रहे हैं हमारे एंटीरियर इथमॉइड एयर सेल्स, और ये यहां पे हमारे जो एयर सेल्स हैं, ये हैं हमारे पोस्टीरियर इथमॉइड एयर सेल्स। ऑलराइट, so posterior ethmoid air cells are present in the superior meatus, not in the middle meatus. Good. The other thing that is very commonly mistaken by the students, and some books also have misprinted it, कि superior ethmoidal superior turbinate या superior meatus के यहाँ पे खुलता है आपका sphenoethmoidal recess और the opening of the sphenoid ostium। आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये अगर मेरे नोज है, तो ये दो लैटरल नेजल वॉल है मेरे नोज के, और स्फीनॉइड बोन पीछे है। तो स्फीनॉइड बोन से जो जो ऑस्टियम आ रहा है वो थर्ड डायमेंशन में है, यानी कि वो ऐसे आ रहा है, लैटरल नेजल वॉल यहां पे है और स्फीनॉइड ऑस्टियम यहां पे है। लेट द स्पेन बी द प्रोब। तो स्फीनॉइड बोन पीछे है, ये यहां पर है, तो ये आपका स्फीनॉइड साइनस का जो ओपनिंग है वो लैटरल वॉल पे नहीं है, वो पोस्टीरियर वॉल पे है, बट दिस एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सुपीरियर टर्बिनेट एरिया। Got my point? So sphenoid sinus does not open in the lateral nasal wall or the superior turbinate, superior meatus, supreme meatus. It does not open on the lateral nasal wall. It opens in the area which corresponds to the lateral nasal wall. So this sphenoethmoidal recess is on the posterior wall of nose, not on the lateral wall of nose. So sphenoid sinus does not open in the lateral nasal wall. Is that clear?
maxillary sinus, anterior ethmoids, and frontal opens in the middle meatus. Posterior ethmoid opens in the superior meatus, and nasolacrimal duct opens in the inferior meatus. Sphenoid sinus opens in the posterior nasal wall just above the choana, around 1.5 centimeters above the choana, above the choana. Remember this, everyone, please. All right. These are small, silly mistakes that you will end up making in the exams because you are always in a hurry of answering the questions, right? So if we have understood this, the three-dimensional orientation of the sinuses, then the last part of today's lecture is the mucociliary clearance. We know that the lining epithelium is which epithelium? It is the ciliated. This is the ciliated columnar. These are columnar cells, long columnar cells, and in between you have got these goblet cells. All right, these goblet cells secrete what is called as mucin. They secrete what is called as the mucin. all right now this mucus जो बनता है, ये mucus continuously ये जो हमारे सीलिया हैं उसको बाहर निकालते रहते हैं. So if you have a look at this diagram, I will show you that, see, this is the direction of the mucociliary clearance. So from all the walls the mucus is going to come out. From all the walls the mucus is going to come out. From all the walls of the sinuses the mucus is going to come out. So ये जो mucus बाहर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बाहर? ये बाहर आ रहा है टू ह्यूमिडिफाई द ड्राई एयर दैट यू आर टेकिंग इन एंड टू रिड्यूस द टेम्परेचर. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, एनाटॉमी के लेक्चर में, कि जो नेजल वाल्व बनता है, तो नेजल वाल्व जो होता है वो उसका क्या फंक्शन है? इंस्पिरेशन के दौरान वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वेलोसिटी कम करता है हमारे इंस्पायर्ड एयर की, ताकि वो ह्यूमिडिफाई होके जा सके और उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो सके. Whereas during inspiration, that is the role of the nasal valve, it reduces the velocity, and ये ताकि जब हवा जाएगी middle meatus से, the maximum current of air goes through the middle meatus. Maximum current of air, it goes through the middle meatus. So when the air will go in through the middle meatus, three big sinuses, anterior ethmoid, the frontal and the maxillary sinus, they are going to regulate the temperature and the humidity of this air. So that is very, very important point. While expiration, what will happen is, यहाँ पे हमने कहा था कि क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा तो बैक करंट्स डेवलप होंगे, राइट? सो बैक करंट्स जो डेवलप हो रहे हैं उसको, जिसको हमने नाम दिया था एडीज करंट, राइट? तो ये जो एडी करंट थे ये जाएंगे साइनस के इसके अंदर और उसको वेंटिलेट करेंगे. ठीक है. सो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि म्यूकस बन कहां से रहा है. इट इज गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स विच आर बिटवीन द कॉलमनार सेल्स. ये म्यूसिन सिक्रीट कर रहा है और इसका डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑस्टिया फ्रॉम ऑल द साइनसेस, and it is going to regulate the temperature and the humidity of the inspired air. एयर का मैक्सिमम करंट कहां से जाता है? थ्रू द मिडल मीएटस. दैट इज द मैक्सिमम करंट ऑफ द एयर दैट गोज थ्रू द इंस्पायर्ड एयर दैट इज गोइंग इनसाइड. All right. So if you have understood this, I am going to leave you with one question today, very easy question. You are going to tell me the answer in the next lecture or in the comments below. What is conca bullosa? What is bulla ethmoidalis? ये बुल्ला क्या है? ये बुल्ला क्या होता है? What is conca bulla and what is bulla ethmoidalis? I am going to leave you with this question, this slide. Next lecture we are going to start with this slide
and we are going to discuss in detail what are the different pathologies that can happen in this entire osteomeatal complex and diseases that can arise from this. That will finish our entire series of rhinology. Thank you.